Hello everyone. Good evening. Am I audible? Good evening everyone. Okay, so let's continue with the chapter, right? We are studying how do organisms reproduce. And we have already studied various methods of asexual reproduction in plants and animals, right? Now in today's class, let's start with the second type of reproduction, that is sexual reproduction. Okay, so in today's class, we will study how sexual reproduction occurs in plants. Okay, so let's begin with the topic. So we have studied that there are two modes of reproduction: asexual reproduction and sexual reproduction. We have studied various methods in asexual reproduction like budding, fission, fragmentation, spore formation, etc. Here, only single parent was involved. Now we will study the second type, that is sexual reproduction, wherein generally two parents are involved of opposite sex, that is male and female. Okay, so different plants, animals, okay, animals including humans, birds, dogs, right? All different kinds of animals, plants show sexual reproduction. Now, when we say two parents are involved, it is not always applicable in every case, because let's say if we have a plant which have bisexual flowers. Bisexual means both male and female reproductive whorls are present in the same flower. Or else, suppose if you have separate flowers, male and female flowers, but on the same plant, then it is possible that a single plant is also involved in sexual reproduction. But in general, when we talk about sexual reproduction, both in plants and animals, two parents are involved. Okay. So this is the first important point here. Now, let's study sexual reproduction in general. First here two parents are involved, one male and the other will be female. They have specialized reproductive cells which are produced in specialized reproductive organs. When we talk about plants, mainly the higher plants, that is angiosperms, okay, flowering plants, then here these gametes are provided by structures like pollen grain and the embryo sac. ओके आज के क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ दीज फ्लावरिंग प्लांट्स आर undergoing the sexual reproduction process. Okay, so during sexual reproduction, generally two parents are involved, male and female. They produce specialized reproductive cells called the germ cells or the gametes. Okay, so the male gamete is produced by the male individual, which are generally called the sperm cells, and the female gamete is produced by the female parent, and the female gamete is called egg cell. Okay, now male gametes, if we talk about humans, majority of the animals mainly, right? Then male gametes, these are smaller in size and they are motile. And if we talk about the female gamete, then it is larger and contains stored food material, right? Because this female gamete, when it will fuse with the nucleus of the male gamete, then it should have some nourishment so that it can divide and form the embryo and a new individual, right? The male and the female gametes fuse together to form a single cell called zygote. Okay, now try to understand this. The parents, male and female, produce specialized cells, the germ cells called gametes, male gamete and female gamete. These gametes will fuse, and this fusion process is known as fertilization. Due to fusion of both these gametes, gametes are also cells. So when the two cells fuse, one common fused cell which is formed is called the zygote. So unicellular zygote. Clear?
Now, what is the importance of sexual reproduction? Let's see one by one. Since here there is fusion of two germ cells, that means fusion of two gametes and mainly from two different individuals, right? Male and female. Here variations are produced, right? When we started this chapter, we have studied how variations are important for survival of the species. The species will be able to adapt if it shows variations during reproduction. Now, when we compare asexual reproduction and sexual reproduction, as in asexual reproduction, only one parent is involved. The offsprings are, identical or almost the same as the parent. But in sexual reproduction, here generally two parents are involved, and that is why what we can see is here more variations will be produced. Clear everyone? Yes? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ सबको क्लियर है? Importance of sexual reproduction, right? Now, as in sexual reproduction, two different individuals are involved, two parents are involved, male and female. Fusion of cells, that is gametes, from two different individuals is involved here. That is why here more variations are produced as compared to asexual reproduction. And variations will give rise to variety and diversity in organisms. That is why we have so many different types of plants, animals, different varieties of all the species. Clear everyone? Right? So variations are very important from evolutionary point of view. Right? It creates diversity and also it helps the organism to adapt to the changing conditions. You will have at least some variants which will be able to cope up and survive with the changing environmental conditions. Okay? It enables the organisms to adapt and survive in the changing environment. So, sexual reproduction के advantages क्या क्या हो जाएंगे? Here, more variations are created, and as more variations are created, this will give rise to variety and diversity, which will in turn help the organism to adapt and survive in the changing environmental conditions. Okay? Now, let's basically understand one more point first. It helps to prevent the complete extinction of animal and plant species. Okay, now just imagine if you have any organism, any plant or any animal, and it is not showing any variation, and if there is any sudden environmental change, then all these individuals in the species will not be able to survive in the changed environmental condition. But if there are variations, then in the species, in the population, you will have at least some individuals which will be, adapted. They will have that variation which helps them to survive in the changed condition. So maybe the others won't be able to grow, but those variants will be able to adapt and survive in the changed environmental condition. So this will prevent complete extinction of a particular animal or plant species. Now in today's class, we will study how reproduction occurs in plants. Now in plants, both asexual as well as sexual reproduction can occur. Asexual reproduction is simply the vegetative propagation, which we have already studied in the asexual reproduction topic. Now let's discuss how sexual reproduction occurs in the plants. Okay. So plants में reproduction कैसे हो सकता है? With the help of vegetative organs and the reproductive organs. जैसे अगर हम higher plants की बात करें, mainly the flowering plants, then here flower is the part or the organ in the plant which is directly involved in the reproduction, sexual reproduction, right? Vegetative organs like the roots, leaves, stem, this will be for vegetative propagation, and flower will be involved in formation of the spores, formation of the gametes, and hence
flower will be the reproductive organ, right? It is involved in sexual reproduction. So let's try to understand how sexual reproduction occur in flowering plants. Okay, so first let's study the structure of flower. So what can you see here? This is a typical diagram of bisexual flower. This is a typical flower. That means a bisexual flower or a complete flower which shows all the different types of layers which are possible, all the different types of folds. Okay, now in this flower you can see this is the stalk like structure, this is the base, and to this base we have different balls attached, different layers in the flowers attached. This outermost layer, ये जो green color के leaf like structures दिख रहे हैं, these are known as sepals. इनको क्या बोलेंगे? Sepals. Okay. Now sepals, okay, they are green, so they can perform photosynthesis, right? Also, these sepals protect the flower when it is in bud condition, right? The young flower that is in bud condition needs protection. So the sepals will be the outermost covering and they will give protection to the flower in its bud condition. And as you can see, it is green in color, right? Everyone must have observed this in flowers, right? Sepals, the outer small leaf-like structures which you can see, as they are green, that means they have chlorophyll. So they can trap light and help in photosynthesis. Clear? So there are two important functions. Protection in bud condition and second is photosynthesis. Okay, ये हो गए sepals. दूसरा, we have these petals which are many a times large, colorful, right, fragrant and very showy, very attractive, right? So these are the petals. Okay. Now, petals in many of the plants are colorful, they are large in size, right? They protect the inner parts of the flower, okay? The male and the female reproductive whorls, these are basically the next whorls, the next layers. These needs protection, right? So the petals will surround them and protect them. Also, as the petals are many a times colorful, fragrant, very large, showy, right? So they help to attract pollinators like insects. Insects are very important in completion of the life cycle in many of the flowering plants because insects are one of the major pollinating agents. They help to transfer pollen grains from the anther of a flower to stigma of mainly the other flower. Okay, self pollination is quite obvious, right? It may happen like without any aid of any specialized pollinating agent. Okay, but whatever may be the case, self pollination or mainly the cross pollination, here insects will be very important. They help to transfer the pollen grains which are produced by the anther to the stigma. Clear? So they help to complete the sexual reproduction process. Okay. तो अभी तक देखो हमने क्या क्या पढ़ा है. We have studied what are sepals. Then we have studied what are petals. Now all the sepals, ये जो individual structure है ना, leaf-like structure, this is a sepal. But we don't have only one sepal, right? We have many. Like here we can see there is one more. So ऐसे पूरे 3D structure होगा ना. यहाँ पे हमने cut section देखा है. ऐसे हमने एक section लिया. सही है, राइट? ऐसे वर्टिकल कट किया और हम देख रहे हैं फ्लावर को. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पूरा 3D स्ट्रक्चर होगा. सही है. सो यू विल हैव अ whorl लाइक दिस, all the sepals. Okay, collectively all the sepals are called calyx. sepals को हम क्या बोलेंगे? calyx. all the sepals collectively, इससे बना हुआ होता है calyx, sepals. इसके बाद हमने पढ़ा है पेटल्स. ये पढ़ा है, ये जो कलरफुल पेटल्स है which attract pollinators and protect the inner walls of the flower, right? तो ये हो जाएगा करोला. ये क्या है? करोला. So corolla is made up of petals. Corolla is made up of petals. Got it everyone? Calyx is made up of sepals. Corolla is made up of petals. Okay, let's see a
What is next? Let's try to understand this. Okay. Minute. Okay. Okay, now sepals and petals are called the outer protective parts of the flower. Okay, now try to understand this. What we have studied so far? During sexual reproduction, gametes or the germ cells are produced, and fusion of these germ cells, that is the male and female gametes, results in the production of zygote. And this is the main step. This fusion, that means fertilization, is the most important step in sexual reproduction. Now, are the sepals or the petals involved in gamete production? No, right? They help to attract the pollinators, they protect the flower, so they are mainly protective parts. But they are not directly involved in the reproduction or mainly the sexual reproduction process. They are not involved in production of spores or the gametes. So, sepals and petals are the non-reproductive whorls of the flower. But definitely they are important, they are protective. Okay. Next. Now, we can see carpel. Okay, carpel is present in the center of the flower, as you can see here. ये दिख रहा है? ये यहाँ पे ये पूरा ये क्या है? Carpel, right? So you can have a single carpel or multiple carpel. You can also use one more word here, pistil. Okay, carpel or pistil. You can have one carpel or multiple carpels also. Collectively, this will be known as the female reproductive whorl, and it is called as gynoecium. Okay, so gynoecium has carpels. जैसे कि और सिंप्लीफाई करते हैं. अब करोला को हमने क्या बोला था? करोला is the entire whorl made up of petals. Calyx is the whorl made up of sepals. वैसे ही gynoecium will be basically one or multiple carpels together. Now in this diagram, like only one carpel is shown. This one, ये जो पूरा ऐसे green color में है, जो पूरा clear है? So carpel is present in the center of the flower and is the female reproductive part. It is made up of three parts. Let's see what are the parts of carpel. So first you can see at the base, ये base है. At the base we have a swollen structure, right? This is the ovary. The swollen bottom part of the carpel is ovary. Next, you can see this middle part, the elongated tube-like part of the carpel. This is known as style. Okay, and then you can see the terminal part, right? This terminal part of the carpel is called stigma. इसे हम क्या बोलेंगे? Stigma. And many a times it is sticky. Why will it be sticky? Think about it. Why the stigma is sticky? So that whatever pollen grains reach the stigma, they will easily be attached. They will remain on the stigma and not slide away. Right? Yes, because remember carpel represents the female reproductive whorl. ये जो basal region है ना, ये पूरा जो basal swollen part है, ये ovary है. ये पूरा ओवरी है. दिख रहा है ये क्या है? ये जो गोल दिख रहा है ये ओवरी है. इस ओवरी के अंदर ये दिख रहे हैं स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स, राइट? दीज आर नोन एज ओव्यूल्स. इन्हें हम क्या बोलेंगे? ओव्यूल्स. ओके, इनसाइड दीज ओव्यूल्स वी हैव basically structures develop which contain the female gamete. इन ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है, right? The egg cell. So the pollen grains which reach the stigma will carry the male gametes, and these male gametes will be carried towards the female gamete for fertilization. Okay, तो देखो अभी तक क्या क्या पढ़ा है, हम धीरे से एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे. Okay, we are studying the structure of flower. We are studying structure of typical flower, bisexual flower or a complete flower which has all the four whorls. Okay, so this outermost whorl, sepals, right? Individual unit क्या है? Sepals, collectively calyx. The next whorl is corolla made up of petals. फिर हम देख रहे हैं innermost whorl. सही है? So here we can see a carpel.
This has stigma, style and ovary. Stigma will receive the pollen grain. It is the terminal part of the carpel exposed to the environment, right? This stalk-like structure is the style, and this basal swollen structure is the ovary. Ovary के अंदर है ovules, और ovule के अंदर you will have specific structures which will contain egg cell, that is the female gamete. Okay, so always remember carpel, ये पूरा stigma, style, ovary, ये पूरा क्या हो गया? Carpel. Clear? Which represents the female reproductive wall. ये क्या represent करेगा? Female reproductive wall. Okay, let's see next. What about the male reproductive wall? Stamen is the male reproductive part of the flower. Okay, so इसके parts अभी देख लेते हैं. Stamen का पहला part है filament. Okay, now can you see these structures like this 1, 2, 3 and these 1, 2, 3 here, right? So you can see a small ये जो structure है. Okay, let's draw it properly. ये दिख रहा है अभी prominent सबको रेड कलर में, सही है? सो ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज फिलामेंट, राइट? सो स्टेमेन के दो मेन पार्ट्स याद रखने हैं. पहला तो ये जो फिलामेंट्स है, सही है? दूसरा ये जो टर्मिनल पार्ट है, यस, दीज स्ट्रक्चर्स, टर्मिनल स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड एंथर. इनसाइड द एंथर pollen grains are produced, and pollen grains basically are the structures which carry male gametes to the stigma, right? Pollen grains contain the male gamete, they produce the male gamete, and during pollination when pollen grain will reach here on the stigma, automatically the male gametes are also transferred. Is it clear everyone, right? So anther is the place where pollen grains are produced, which are generally yellowish in color. Very good. Let's see next. Now anther and the filament collectively will be called stamen, and stamen represents the male reproductive wall. Okay, देखो बेटा ध्यान से सुनना है. ओके, ये देखो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, सही है? फ्लावर के स्ट्रक्चर में 4 पार्ट्स हैं. आउटरमोस्ट वर्ल, आउटरमोस्ट वर्ल क्या है हमारे पास? यस, वी हैव दिस कैलिक्स. कैलिक्स इज मेड अप ऑफ सेपल्स. इसके बाद अंदर क्या है? वी हैव द करोला which is made up of petals. Then we can see the third wall has stamens which represent the male reproductive part of the flower. Okay, this has two main parts. Stamen has two main parts, anther and filament. Anther is the structure in which pollen grains are produced. This filament will be attached at the base. Got it? Calyx, corolla and stamens. Okay, stamens, ये जो सारे stamens है ना, 1, 2, 3, right, and these 3 here, right? ये जो stamens है इनको collectively हम बोल सकते हैं androecium. क्या बोल सकते हैं? Androecium. देखो, I'll write it here. Androecium. Okay, this represents the male reproductive wall of the flower because here male gametes are produced. Anther is the main structure in which the pollen grains are produced. अब यहाँ पे जैसे 6 दिख रहे हैं ना हमें stamens, so collectively all the 6 stamens will be androecium, male reproductive wall. Then the innermost wall of the flower, सबसे ये जो अंदर वाला ये जो wall है, layer है, सही है? It has carpels. अब एक कार्पेल हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकता है, सही है? सारे कार्पेल्स को मिलके हम क्या बोल सकते हैं? गाइनोशियम. क्या बोल सकते हैं? गाइनोशियम. ओके, सो गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल. ओके, इनके एक एक जो ऐसे फिलामेंट्स है उनको हम बोलेंगे कार्पेल्स.
कार्पेल्स के 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये दिख रहा है, ये जो टर्मिनल पार्ट है ये स्टिग्मा, ये क्या है स्टाइल, और ये बेसल बेसल स्वोलन पार्ट जो है दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 दीज आर द ओव्यूल्स एंड इनसाइड द ओव्यूल्स बेसिकली सिंपल, अभी शॉर्ट में याद रखो एग सेल प्रेजेंट होगा, सही है। सो फीमेल गैमेट यहाँ पे ओवरी के अंदर प्रोड्यूस हुआ, ओव्यूल्स के अंदर स्पेसिफिकली, और मेल गैमेट कहाँ पे, इन द पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, एंथर के अंदर, राइट। नाउ फॉर फर्टिलाइजेशन टू ऑकर वी नीड टू ब्रिंग द टू gametes, male and female gametes together. Pollen grains which are produced here in the anther have male gametes, और इस ओवरी के अंदर ये जो ओव्यूल्स है इसके अंदर है फीमेल गैमेट. सो we need a process which will transfer the pollen grains to the stigma so that the male gametes can be carried towards the female gamete for fertilization. Remember, when we are saying sexual reproduction in any organism, like here we are discussing flowering plants, we need to keep in mind that fertilization is the step which is compulsory, right? Here fertilization should occur, and then only we can call it sexual reproduction. Is it clear? So what we can summarize here, any typical flower, bisexual flower, okay, that means it will have both the whorls, male and female, that means the stamens and the carpels are present in the same flower, तो ये bisexual flower बन जाएगा, सही है। देखो यूनिसेक्सुअल कब बोलेंगे, अगर दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट है, मतलब एक फ्लावर में एक तो मेल है नहीं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। ये जो फ्लावर इस डायग्राम में ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बिकॉज हियर बोथ मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट, ओके। देयर आर 4 whorls, the sepals which form the calyx, petals which form the corolla, then the stamens which form the androecium which has anther and filament, right? And then the innermost, सबसे अंदर ये कौन सा whorl है, ये जो green white में है, yes, gynoecium. The whorl is gynoecium made up of carpels. Carpels represent the female reproductive part of the flower. This has 3 parts, stigma, style, ovary. Clear? चलो आगे बढ़ते हैं, okay? Now let's see the structure. So ये जो पूरा यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज स्टेमेन। ये क्या है, एक स्टेमेन को हम देख रहे हैं, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओके। सो ये जो ऊपर दिख रहा है ये क्या है, एंथर, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे, ओके। अब इस एंथर को हम ऐसे कट करके देख रहे हैं, ओके, ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, ये एंथर है, दिख रहा है, ये देखो अंदर रेड रेड कलर की दिख रहा है, ये क्या है, pollen grains है which will be released when they are completely ready, right? So anther is basically bilobed. There are 2 lobes which are present here. Anther is bilobed. Bi means 2. Lobes are present, right? 2 lobes. The anther produces pollen grains. Very very important. अगर आपको फंक्शन पूछा है of anther तो क्या लिखोगे, this is the site where pollen grain formation occurs, okay. Every pollen grain, okay, like let's say we have taken out only one pollen grain, remember in an anther thousands of pollen grains will be produced and released, right? Each pollen grain will have 2 male gametes, because in flowering plants there is a process known as double fertilization. There are 2 fusions which are involved, right? That is why there is a need of 2 male gametes. So when we study the double fertilization process, you will understand. अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, this is the stamen, right? One stamen. ये क्या है, ये long filament है, ये क्या है, anther है, ये एंथर का कट सेक्शन हम देख रहे हैं, देखो अंदर यहाँ पे ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, इनमें पोलन ग्रेन बनते हैं, once they are ready pollen grains will be released. Each pollen grain have 2 male gametes, their gametes refer to the nuclei. Next, when we look at this carpel, stigma, style, ovary, ये ovary है, inside the ovary, okay, let's look what is inside the ovary, okay. Now this is a very simplified diagram which we are studying,
Okay, try to understand. This particular structure is present inside the ovary. Okay, this is one ovule. ये क्या है? Ovule है. Now try to focus. एक बार पीछे देख लो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, पहले हम क्या समझा रहे हैं. सही है. दिस इज द ओवरी. दिस 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? ovules. Inside the ovary we have ovules. Okay, now let's see. ये एक ओव्यूल है. हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर अभी सिंपल शॉर्ट में समझे. अब देखो, ओव्यूल में ये ऐसे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, नोन एज इंटेग्यूमेंट्स. एंड इनसाइड दिस ओव्यूल अ स्ट्रक्चर नोन एज एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म. कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? एम्ब्रियो सैक. ओके, तो ये ओव्यूल है. अब ये देखो, इनसाइड ओव्यूल देयर इज एम्ब्रियो सैक. ये दिख रहा है, ये इतना जो पार्ट है ये. ओके, ये रेड कलर में जो है ये वॉल्स है. रेड कलर में प्रोटेक्टिव वॉल्स है, इंटेग्यूमेंट्स. और ये देख रहे हो, दिस इनसाइड, दिस इज द एम्ब्रियो सैक. एट द बॉटम ऑफ एम्ब्रियो सैक देयर इज द एग सेल. ये यहाँ पे दिख रहा है. दिस पर्टिकुलर सेल इज द female gamete, that means egg cell. Okay, next, in the center of the embryo sac, let's see what is present. We have this secondary nucleus. So initially जैसे दो अलग अलग होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई. जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये पोलर न्यूक्लियाई से बनता है. पोलर न्यूक्लियाई. ओके, देखो यहाँ पे लिखा है, आप नोट डाउन करके ले सकते. ओके, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रहा है. यस, पोलर न्यूक्लियाई. नोट डाउन करो. ये देखो, ये दो सेपरेट होते हैं इनिशियली, बाद में फ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, फ्यूजन के बाद हम बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस. आप बेसिक ऐसे भी याद रख सकते हो. देयर आर टू न्यूक्लियाई इन दिस लार्ज सेंट्रल सेल नोन एज पोलर न्यूक्लियाई. ये क्या है? ये कौन सा वाला सेल है? एट द बॉटम वन सेल इज द एग सेल. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द अदर सेल्स आल्सो व्हिच आर प्रेजेंट. ये जो तीन सेल्स दिख रहे हैं, राइट? यस, दीज थ्री हियर, 1 2 3, ये जो तीनों हैं, राइट? दीज आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स. ये क्या है? एंटीपोडल सेल्स. इज इट क्लियर? ओके, ये देखो यहाँ पे, यू कैन सी हियर एंटीपोडल सेल्स. ओके, अब ये जो दोनों सेल्स है, ये और ये, लाइक these two cells here, these are synergids. These are synergids. Okay, और एक बार देखेंगे, अच्छे से समझना है सबको. We are simply looking at one ovule. Okay, yes, डायग्राम में याद है ना, हमने देखा था स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी, राइट? और ओवरी के अंदर आपने देखा था ऐसे ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 पिछले डायग्राम में. सही है. तो हम इस एक ओव्यूल को ही देख रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? हम एक सिंगल इस ओव्यूल को, यहाँ पे एक सिंगल ओव्यूल को हम देख रहे हैं. ये पूरा एनलार्ज स्ट्रक्चर. ये रेड कलर में जो है, दीज आर कॉल्ड एज द इंटेग्यूमेंट्स. ये रेड कलर में क्या है हमारे पास? इंटेग्यूमेंट्स. These are the protective walls. Okay, then inside this a special structure known as embryo sac is formed. Okay, तो काम की बात क्या है? ovules are present inside the ovary. मतलब ये एक है, ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट? इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली वन विल बी प्रेजेंट. यू मे हैव वन और यू मे हैव मेनी. ये एक ओव्यूल हम देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ओवरी के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं. ये रेड कलर में प्रोटेक्टिव वॉल से, इनको बोलेंगे इंटेग्यूमेंट्स. ओके, और अंदर ये जो पूरा है ये सैक, दिस इज द एम्ब्रियो सैक. ये जो टॉप है 3 सेल्स येलो कलर में, दीज आर एंटीपोडल सेल्स. ये जो सेल्स है दोनों, दीज टू, दीज आर सिनर्जिड्स. ये जो यहाँ पे सेल है, ये दिख रहा है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा. दिस इज द एग सेल, दैट इज द फीमेल गैमेट. Clear? Next, here in this large central cell, we have first of all 2 separate nuclei known as the polar nuclei, जो बाद में आपस में फ्यूज हो जाते हैं
to form the secondary nucleus. Clear? Yes, जैसे ये fuse हो गए, एक common बनेगा nucleus, secondary nucleus. Okay? So ये हो गया हमारा structure of ovule. Now let's study more about flowers first. Flowers can be unisexual or bisexual. Okay? Unisexual flower का मतलब क्या है? A flower that contains either stamens or carpels. Flower unisexual कब होगा? Uni means single, right? Unisexual कब कहलाएगा कोई भी flower? When the flower contains either stamens or carpels. मतलब एक तो flower male होगा, नहीं तो female होगा. Separate flowers है यहाँ पे. So such flowers are called unisexual flowers. For example, in plants like papaya and watermelon, we have unisexual flowers. Now, let's understand what is the meaning of bisexual flower. Bi means two. So, in a single flower, both the reproductive whorls, that is stamens and the carpels. Stamens represent the male reproductive part. Carpels represent the female reproductive part. Both stamens and carpels in same flower. मतलब जो हमने flower structure पढ़ा है, सही है, जो structure हमने पढ़ा था उसमें दोनों थे ना एक ही flower में, तो वो एक bisexual flower था. So flowers, bisexual flowers are seen in plants like hibiscus and mustard. Right? Now these are the important examples which you have to remember. Unisexual flowers. Unisexual मतलब separate male, separate female in papaya and watermelon. And bisexual का मतलब एक ही flower के अंदर both male and female, that is stamens as well as carpels. Okay? Unisexual flowers are seen in papaya and watermelon. Bisexual flowers are seen in hibiscus and mustard. Okay? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो flowers of hibiscus and mustard. Okay. Now, pollen grains are produced inside the anther, and pollen grains contain the male gametes, two male gametes, right? Because double fertilization होना चाहिए तो दो male gametes की जरूरत है. Okay? Now, anther के अंदर pollen grains है, they are released from the anther, and we have seen that the egg cell, क्या पढ़ा है हमने? Embryo sac के अंदर पढ़ा है ना egg cell. Egg cell मतलब ओवरी के अंदर है. So in order to fuse both the gametes for fertilization to occur, we need another important process. So fertilization से भी पहले एक जो process होगा which will transfer the pollen grains to the stigma is pollination. Okay, so let's try to understand what is the meaning of pollination. The transfer of pollen grains from anther to stigma is called as pollination. Pollen grain production कहाँ पे होता है? Anther. कहाँ पे पहुंचाना है pollen grain? Stigma. It may be of the same flower or different flower. जैसे इस केस में यहाँ पे एक bisexual flower है, ये आपको दिख रहा है, ये stamens है, ये stigma है of the carpel. तो जो pollen यहाँ पे बनेगा anther में, वो यहाँ पे transfer किया जाएगा. समझ में आ गया? Now, if transfer occurs in the same flower, जैसे इस डायग्राम में देखो, जो पोलन यहाँ पे बना वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हुआ है. If the transfer occurs in the same flower or another flower of the same plant, okay, so genetically ये क्या हो जाएगा? Self pollination. Okay, simple words में अभी के लिए हम याद रख सकते हैं, if the pollen grains are transferred from anther to stigma of the same flower, then definitely it will be self-pollination. Even if it is transferred from anther to stigma of another flower on the same plant, genetically it is still a self-pollination. Clear? ये देखो जैसे यहाँ पे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में लेकिन सेम प्लांट. ओके, ये भी pollination ही है. And you can also have a scenario wherein the pollen grains are transferred from anther to stigma, from one flower to another flower
which is present on a different plant. Means here two different plants are involved, definitely of the same species. Okay, so let's say you have two hibiscus plants. दोनों में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स रहेंगे. हिबिस्कस में हमने पढ़ा है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स से. तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन तो पॉसिबल है ही, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है that pollen grains from one flower is transferred to another flower on different plant. So this will be cross pollination. Okay, so if the pollen grain is transferred from one flower to the flower of another plant of the same species, it is known as cross pollination. तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं दो अलग अलग प्लांट्स है, अलग अलग फ्लावर्स है, अलग अलग प्लांट्स पे है. Okay, and here you can see how the insects, right, they are transferring the pollen grains from one flower to another, right? So this will be cross pollination. Two different plants are involved. Like butterflies are also major pollinators. Okay, so pollination means transfer of pollen grains from anther to stigma. There are two types of pollination: self-pollination and cross-pollination. Now, these transfer of pollen grains can occur through different agents like wind, insects, and there are many other agents like water, birds, bats, right? Yes, other animals also, right? Yes, but the common or major pollinators will include wind, insects, birds, right? To some extent water, right? तो ये याद रखना है. Like in case of maize plant, okay, that is in case of corn, wind will be the transferring agent, right? With the help of winds, transfer will occur. Then in certain plants, insects will help in pollination. So pollen grains stick to the wings, legs, or the proboscis of the insects, and when the same insect sits on another flower, these pollen grains are transferred, right? Yes, other organisms also, other agents में क्या क्या आएगा? You know, like squirrels, bats, water, birds. These are also common pollinators. Okay. Now, so far we have studied what is the structure of flower, right? Stamen and carpel are the reproductive parts of the flower. Stamen is the male reproductive part. Carpel is the female reproductive part. As the stamen and carpels are directly involved in the reproduction process, these are called the reproductive walls of the flower. Then we have studied that anther is the part of stamen where pollen grains are produced, and pollen grains contain two male gametes. We have also studied कार्पेल का जो बेसल रीजन है, जो इस डायग्राम में भी है, ये बेसल रीजन है, ये पूरा कार्पेल है ना. स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी, द स्वोलन पार्ट. इसके अंदर ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है. सही है, राइट? नाउ तो इस ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक में हमने क्या पढ़ा है? एग सेल होता है ना, फीमेल गैमेट. Okay, so male gametes are present in the pollen grains. Female gametes are present here in the embryo sac. We have also studied pollination, which involves transfer of pollen grain from anther to the stigma. The pollen grain has reached here on the stigma, but female gamete कहाँ पे है? Here in the ovary. So don't you think we should also have a mechanism to transfer the male gametes, the male nuclei, which are present in the pollen grain from here, the surface of stigma, to the embryo sac. I repeat, pollen grain यहाँ पे है ना pollination के बाद. egg cell कहाँ पे है? ओवरी के अंदर है. fertilization होना चाहिए तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? पहले the male and the female gametes should come together so that fertilization, that is fusion, occurs. So after the pollen lands on the suitable stigma, means it should be the stigma of the same species, right? Next, compatible होने चाहिए, right? So suitable stigma पे pollen grain land हो गया है. It has to reach the female germ cells which are in the ovary. Okay, so here you can see the pollen grains which have reached. It may be from the same flower or maybe different flower.
अगेन डिफरेंट फ्लावर में बी ऑन द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट, मतलब ये सेल्फ पॉलिनेशन हो या क्रॉस पॉलिनेशन हो। पोलन ग्रेन तो यहाँ पे पहुंच गया इन द ऑन द स्टिग्मा, राइट। सो नाउ a tube like structure will form, क्या होगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे देखो ये पोलन ग्रेन है, ओके, दिस इज अ जूम स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन है, इसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। दिस इज नोन एज पोलन ट्यूब एंड दिस पोलन ट्यूब विल कैरी द टू मेल गैमेट्स। ये दोनों जो न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, दीज आर द टू मेल गैमेट्स which will be involved in fertilization। ये दिख रहा है ब्राउन कलर में जो है, these are the two male gametes। So two male gametes appear at this point in the pollen tube, okay। Due to pollination, pollen grain reached here on the stigma. Now egg is in the ovary, so pollen grain will produce a tube like structure called pollen tube। This pollen tube will pass through these tissues of stigma, style, ovary and reach here in the embryo sac। This pollen tube is responsible for transfer of the male gametes। Now this nucleus which you can see is the vegetative nucleus। It is not participating in the fertilization process। ये जो है दोनों brown color में, these are the male gametes, okay। So let's try to understand। Here you can see these two are the male gametes, okay, the nuclei। Pollen tube grows through the stigma and the style by dissolving the tissues and reaches the ovary। जैसे यहाँ पे आपने देखा, सही है। और एक बार देख लो, ये पोलन ग्रेन है, okay। Now it will grow a pollen tube। This can you see? And it reached here, right? Pollen tube grew and it reached here। Pollen tube is carrying the male gametes, two male gametes, right? ये देखो दिख रहा है, ये thin tube जो है ये pollen tube है। Of these, now pollen tube is giving two male gametes, right? One of the sperm nucleus, that is the male gamete, enters the egg cell and fuses with its nucleus। So one male gamete from the pollen tube which is entering the embryo sac will fuse with the female gamete and your zygote will form। The second male gamete will fuse with these two nuclei here in the center। embryo sac के structure में हमने पढ़ा है ना, पोलर न्यूक्लियर, ये जो सेंटर में है दोनों, ये वाले, ये पूरा एम्ब्रियो सैक है। यहाँ पे 3 सेल्स होते हैं, यहाँ पे 3 सेल्स होते हैं। Here one of the cells is egg। First male gamete fused with the egg cell to form the zygote। जो दूसरा male gamete है, okay, it will fuse with these two nuclei here। ये जो दोनों है, okay, in the center, here in the central cell of the embryo sac। Clear? These two nuclei will fuse with the second male gamete। So here 3 nuclei are fusing, 2 polar nuclei plus 1 male gamete। As 3 nuclei are fusing, this is triple fusion। When the egg and the male gamete fuse, ये एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है जहां पे जाइगोट बनता है। और दूसरा जो फ्यूजन है, 2 polar nuclei and the second male gamete, 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन, ओके। यस, सो सी हियर द अदर स्पर्म न्यूक्लियस दैट इज द मेल गैमेट moves towards the 2 polar nuclei in the central cell and fuses with them। तो एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज हुआ और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो गया। 3 न्यूक्लियाई टुगेदर will produce the endosperm nucleus। ये बार बार डिवाइड होता है और एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बनता है, राइट। नाउ सी, जो जाइगोट बनेगा, दिस जाइगोट विल फॉर्म द एम्ब्रियो, जो सीड के अंदर प्रेजेंट होगा। एम्ब्रियो से ही नया प्लांट बनता है, राइट। यस, सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो कहां से आएगा, जाइगोट। जाइगोट विल अंडरगो रिपीटेटिव डिविजन्स टू फॉर्म द एम्ब्रियो और इसी से हमें नया पेड़ मिलेगा। बट ये एम्ब्रियो बनने के लिए नरिशमेंट की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो ये न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म। क्लियर? सो अब देखो, जो पोलर न्यूक्लियाई थे ये सेकंड मेल गैमेट के साथ फ्यूज हुए, 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए थे, सही है। और जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, ये बार बार डिवाइड होगा और एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बनेगा अल्टीमेटली, व्हिच इज नोन एज एंडोस्पर्म। दिस एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन so that zygote
forms the embryo. Clear? Yes. So altogether there are occurred two fertilizations. मतलब दो बार फ्यूजन हुआ है. फर्स्ट यहाँ पे क्या हुआ है एवरीवन? सबसे पहले egg, okay, that is the female gamete fused with one male gamete. Okay, note it down. Egg cell fused with the male gamete. Always remember, the egg cell will be haploid. Male gamete will also be haploid. That means it will have only one set of chromosomes. Single set. देखो हमारे normal body cells में we have diploid cells. That means we have two sets of chromosomes. लेकिन जब gametes बनते हैं तब मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है इन सेल चैप्टर. There are two types of cell division, mitosis and meiosis. Meiosis occurs during gamete formation, right? ये short में याद रखो. So gametes are haploid. That means they have only one set of nucleus, right? They have one set of chromosomes. Gametes are haploid. That means they have one set of chromosomes. So egg is haploid. Male gametes are also haploid. ये दोनों cells fuse हो जाएंगे to form zygote. Okay, दोनों cells fuse हो जाएंगे to form zygote. आगे इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन. ये क्या है? फर्टिलाइजेशन. Egg and the male gamete fuse to form zygote. इस zygote से आगे क्या बनेगा? एम्ब्रियो. zygote से आगे क्या बनेगा? एम्ब्रियो. Got it? Very good. Yes. Now ये हमारा फर्स्ट हो गया फ्यूजन. ओके, फर्स्ट क्या हुआ? नॉर्मल फर्टिलाइजेशन. एग प्लस मेल गैमेट फॉर्म्स द zygote. zygote से आगे बनेगा एम्ब्रियो. अब दूसरा फर्टिलाइजेशन देखो कौन सा है, दूसरा फ्यूजन देखो कौन सा है. वी हैव द पोलर न्यूक्लियर. ओके, यहाँ पे दो होते हैं ना ये न्यूक्लियस, तो हम ऐसे लिख सकते हैं m प्लस n, टू न्यूक्लियर. और सेकेंड मेल गैमेट होता है, तो ये भी मेल गैमेट है. पोलन ग्रेन प्रोवाइड्स टू मेल गैमेट्स, राइट? तो ये भी मेल गैमेट है, ये भी हैप्लॉइड ही रहेगा. जब पोलर न्यूक्लियर, दैट मींस ये n will fuse with the male gamete. This is also n. That means haploid, one set. तो यहाँ पे देखो 1 2 3. अब कितने सेट हो गए? 3 सेट हो गए. तो ये हम कैसे लिख सकते हैं एवरीवन? फ्यूजन के बाद ये कैसे बनेगा? This will form the final product मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है? This will form the endosperm nucleus. Endosperm nucleus, जिससे एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बनेगा, एंडोस्पर्म. ओके, यू कैन सी हियर, राइट? जब ये दोनों फ्यूज हो गए क्या बना? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना. अब ये कैसे लिखेंगे बताओ? यस, 3 न्यूक्लियाई फ्यूज्ड, राइट? तो ये हम लिख सकते हैं 3n, 3 सेट्स. एंडोस्पर्म भी कैसे होगा? 3n, ट्रिप्लॉइड. ओके, जाइगोट कैसे होगा? जाइगोट कैसे बनता है? Only n plus n. Egg is haploid. Male gamete is also haploid. दो haploid cells fuse होते हैं तो दो सेट रहेंगे. तो ये zygote कैसे होगा? Diploid. जो embryo बनेगा ये भी कैसे होगा? Diploid. Got it everyone? Yes. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्यूजन दो बार हुआ. पहला egg and the male gamete. This is the normal fertilization where the zygote is formed. दूसरा polar nuclei, दो है with the male gametes. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन. क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन. Got it everyone? This process is triple fusion. 3 nuclei are fusing here. Yes, here n plus n and this n here, male gamete. 3 nuclei fuse to form triploid endosperm. Okay, तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ. तो इस पूरे प्रोसेस में क्या दिखाई दे रहा है हमें? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, एक फ्यूजन हो गया. दूसरा ट्रिपल फ्यूजन, ये दूसरे टाइप का फ्यूजन हुआ. इसीलिए फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन. ये जो हमने लिखा है ना पूरा, यही क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन.
First, normal fertilization where the zygote is formed. Second, triple fusion. So fertilization plus triple fusion will be double fertilization. Now zygote formation के वक्त जो fertilization होता है इसको हम और एक नाम दे सकते हैं, right? It is also called syngamy. Gamy means fusion, right? So here remember fertilization is also called syngamy. So can we say that double fertilization is syngamy plus triple fusion? सही है. डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन. सो द पोलन ग्रेन विच वाज ट्रांसफर्ड ऑनटू द स्टिग्मा, दिस प्रोड्यूस्ड पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब कैरिड द टू मेल गैमेट्स हियर. सही है, ये दोनों मेल गैमेट्स. वन मेल गैमेट फ्यूज्ड विद द एग सेल टू प्रोड्यूस जाइगोट. दूसरा हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं एवरीवन? यस, the polar nuclei, two nuclei fuse with the male gamete to form the triploid endosperm nucleus. So this will be later giving rise to endosperm. तो ये जो endosperm है यहाँ पे, ओके, जो बनेगा, this provides nourishment. ये nutritive tissue है, nutritive tissue, okay. It will provide nutrition to the embryo. जाइगोट से एम्ब्रियो अगर बनना है तो न्यूट्रिशन की जरूरत है. सो हमेशा पहले एंडोस्पर्म बनता है एंड वंस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड देन द जाइगोट विल स्टार्ट डिवाइडिंग टू प्रोड्यूस एम्ब्रियो. ओके, सो ये हो गया हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस. ओके, तो इसको हम समराइज कर लेते हैं फटाफट से. ठीक है, let's summarize it quickly. Now what can we see here? Double fertilization, ऐसा ही क्यों बोला? One sperm nucleus, that is one male gamete fused with the egg cell, right? Egg cell nucleus, and the other sperm nucleus, that is the second male gamete fused with the two polar nuclei together. तो ये दो फ्यूजन हो गए. पहला सिंगैमी मतलब नॉर्मल ट्रू फर्टिलाइजेशन और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन. That is why it's called double fertilization. So after the fertilization process, the flower has completed its job. It has served its purpose. Flowers are basically meant for sexual reproduction. They have stamens and carpels, which are the reproductive valves. They are involved in the formation of pollen grains and the embryo sac. Pollen grains provide the male gametes and embryo sac contains the female gamete, right? अब fertilization हो गया, zygote बन गया, endosperm बन गया. सही है. So flower has done its job. So the remaining parts of the flower, now they will shrivel off, they will wither and they will fall off. So the petals, stamens, style, stigma, सही है, right? Sepals also, ये सब क्या हो जाएंगे? They will wither, they will shrivel and they will fall off from the plant because they have served their purpose. Okay, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं. Okay, wither means they become dry, right? So sepals दिख रहा है यहाँ पे, stigma, style, petals, stamens, they will dry out and fall off. The ovary, अब ये पूरा ये दिख रहा है, ये जो है ये ovary है. This ovary after the fertilization will form the fruit. So याद रखना है हमेशा जो भी फ्रूट्स हम कंज्यूम करते हैं, सही है, मेजॉरिटी ऑफ देम ओवरी से पूरा फ्रूट बनता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. व्हाट इट? ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट. नेक्स्ट, द ओवरियन वॉल. नाउ जो ओवरी है इसका एक वॉल है, कवरिंग है, जैसे इस डायग्राम में पूरा एक व्हाइट कलर का है. सही है, ये ओवरी का ये वॉल है. This will form the fruit wall. Very obvious. If ovary is forming the fruit, ovary wall will form the fruit wall, as you can see here in the diagrams, right? Now the ovules which are present here, ये देखो ये पूरा ovary है, okay, और ये जो है 1 2 3 4 5 6, these are the ovules, right? Ovules become seeds after fertilization. Okay, so this is very important. Note it down.
ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आया है सबको? ओके, एंड दीज सीड्स कंटेन द एम्ब्रियो, दैट मीन्स द फ्यूचर प्लांट। ओके, अब देखो ये डायग्राम वापस एक बार देखो। ये ओवरी है, इससे फ्रूट बन रहा है, फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, राइट? इसको समझने की कोशिश करो। ये पूरा ये जो इतना स्ट्रक्चर है, ये ओवरी है, ये फ्रूट में कन्वर्ट होगा, ये एनलार्ज होगा, मैच्योर होगा, डिफरेंशिएट होगा, सही है? ये ओवरी बना फ्रूट। अब ओवरी के अंदर थे ओव्यूल्स, ओव्यूल्स आर कन्वर्टिंग इनटू सीड, दैट इज व्हाई फ्रूट्स कंटेन सीड्स। नाउ इन ओव्यूल्स के अंदर जाइगोट है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, ये सब आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम बोल रहे हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड एंड फ्रूट्स विल फॉर्म। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर हमने पढ़ा है एग सेल। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, वी हैव द जाइगोट, जाइगोट गॉट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। सो डोंट यू थिंक कि जब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा है, similarly in the same time frame the zygote is also slowly converting into embryo. So the seeds contain the embryo, that is the future plant. When favorable conditions are present and the seed is completely ready, it is completely mature, embryo is completely ready, then the seed will germinate. Okay, तो seed के अंदर embryo होता है, embryo will germinate in appropriate conditions. The seed will germinate to give rise a new plant. So embryo inside the seed develops into a seedling. तो इसमें root बनेगा, stem बनेगा, leaves बनेंगे under appropriate conditions. This is known as germination. So as you can see here in the diagram, right? Germination process. Everyone got it? Okay. अब ये जो seeds बनते हैं, सही है? Seed जो बनता है, इसमें जो कवरिंग है, दैट इज द सीड कोट. ओके, एंड सीड कोट बेसिकली प्रोटेक्ट्स द embryo, right? Now in case of flowering plants you have two types of seeds, monocot and dicot. Monocot means a single cotyledon is present, and dicot means two halves, two cotyledons are present in the seed. Okay, now when you take any seed, okay, let's try to understand. अगर हम कोई सीड लेंगे तो सीड में कौन कौन से पार्ट्स देखे हैं हमने, क्या क्या प्रेजेंट है? वी हैव द सीड कोट, दैट इज द कवरिंग ऑफ द सीड, एंड वी हैव द एम्ब्रियो. ओके, सो इस एम्ब्रियो के तीन मेन पार्ट्स है. एम्ब्रियो के कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स. ओके, लेट्स लिस्ट देम. वी हैव द radical, we have plumule, and we have the cotyledons. Okay, these are the 3 main parts: radical, plumule and cotyledons. ये embryo के part है, इतना याद रखो. Okay, radical which is present in the seed, which is a part of embryo. So during germination, this radical will give rise to the roots, the root system. Plumule will give rise to the shoot system, that is the stem, leaves, right? And cotyledons basically store the food material. They store food material so that when you have the plant in seed condition, you require some nourishment. Initial root and shoot formation also requires nutrition, right? So that will be provided by the cotyledons. Okay, so cotyledons, you may have single or 2 cotyledons depending on the plant. Cotyledons will store the food, plumule will form the shoot, and radical will form the roots. Radical, plumule and cotyledons are the 3 parts of embryo. Seed में embryo होता है. So when the seed germinates, okay, when the seed germinates, ये एम्ब्रियो जो है इसका रेडिकल ये रूट बनाएगा, प्लूमूल शूट बनाएगा, कॉटिलिडन्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, सीड कोट विल बर्स्ट ओपन, राइट? दिस इज आवर न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस्ड. एवरीवन, आज जो भी पढ़ा है सबको क्लियर है, राइट? सो आज हमने क्या पढ़ा है? वी हैव स्टार्टेड विद
the second method, that is sexual reproduction. And in today's class, we have studied how sexual reproduction occurs in flowering plants. We have seen the structure of flower. Next, the two types of flower, unisexual and bisexual flowers. Then the various steps which are involved in the sexual reproduction process. Okay, so if we have to list down all the steps, पहले flower बनेगा, सही है? Then flower में anther है, anther के अंदर pollen grains बनेंगे. ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनेगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट है. Pollen grains will produce the male gametes. Then pollination will occur. Pollination is the process in which pollen grains will be transferred from anther to stigma. Maybe same flower or different flower. Next, pollen tube will form. Pollen grain has brought the two male gametes. So these two male gametes will be carried by the pollen tube towards the ovules present in the ovary. Now double fertilization will occur क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के फ्यूजन होते हैं. एक सिंगैमी मतलब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन where a zygote is produced, and second triple fusion for endosperm formation. Then after fertilization जो बाकी के फ्लावर के पार्ट्स है, ओके, जिनका अब काम पूरा हो चुका है, ओके, petals, sepals, style, stigma, their job is over. They will wither, they will dry out, and they will fall off. Ovary will give rise to fruit. Ovules will form the seed. Seed contains the embryo, that is the future plant. Embryo के तीन parts है, radical, plumule and cotyledons, right? And we have seen how they are important during germination. Radical gives rise to roots. Plumule gives rise to shoot, and cotyledons serve for storage of food. So here we have completed the sexual reproduction in flowering plants, this particular topic. In next class, let's move on to the next topic. I hope this is clear to everyone. Bye everyone. Take care.